ओ धीरज भाई। भिखू भाई, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो? परेशान? ये आपके लाडले ने सबको परेशान कर रखा है। आज इसने मेरे नंदू का सर फोड़ दिया। उमंग, लेकिन पापा उसने। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इनसे हाथ जोड़कर माफी मांगो और वचन दो दोबारा कभी नंदू पर हाथ नहीं उठाओगे। आई एम सॉरी, मैं फिर से कभी नंदू पे हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पापा, दिस इज नॉट फेयर। पहले उसने मुझे धक्का मारा था, मैं मार खा के घर आता तो आपको अच्छा लगता? मार खा के नहीं, थैंक यू कह के। क्या थैंक यू? मुझे धक्का मारने के लिए थैंक यू? हाँ थैंक यू, जैसे प्रभुदास ने अपने मित्र को कहा था। प्रभुदास यानी हमारे गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी। हाँ पापा, हमारे स्वामी जी। पर उन्होंने थैंक यू कब कहा था? जब वो 8-9 साल के थे तब। प्रभु रोज अपने मित्रों के साथ तालाब किनारे खेलने जाते। एक दिन भगु नाम के उनके एक नटखट मित्र ने उनको तालाब में धक्का मार दिया। 15 फुट गहरा पानी। प्रभु पूरी ताकत लगाकर अपने छोटे छोटे हाथ पैर मारने लगे। कभी पानी में डूब जाते तो कभी पानी के ऊपर उनका सर दिखाई देता। बाप रे! फिर? जैसे तैसे प्रयत्न करके प्रभु किनारे पहुंचे। सब मित्रों की जान में जान आई। धक्का मारने वाला भगु तो डर के मारे रोने लगा था। प्रभु उसके पास गए। सबको लगा अब भगु की खैर नहीं, प्रभु उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन हुआ कुछ और ही। प्रभु ने प्यार से रोते हुए भगु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे रोता क्यों है भगु? अच्छा हुआ तूने धक्का मारा, देख मुझे तैरना आ गया। ऐसा कहा प्रभु ने? हाँ, इतनी छोटी उम्र में इतनी करुणा, इतने सूरत भाव का दर्शन करवाया, क्योंकि वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जगत कल्याण के लिए धरती पर आए परम तत्व थे। हरि प्रसाद स्वामी की जय। पापा, मुझे उनके और भी प्रसंग सुनाओ ना। मुझे स्वामी जी के प्रसंग सुनना बहुत अच्छा लगता है। अरे उनकी अद्भुत लीलाओं के किस्से तो अनगिनत है। अच्छा, मेहुल अंकल को जानते हो ना? डॉक्टर अंकल? हाँ, तुम्हारे डॉक्टर अंकल। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के बदले में प्रभु कैसी करुणा बरसाते हैं, उसका उत्तम दर्शन होता है उनके जीवन के इस प्रसंग में। मेहुल भाई 1991 में परम पूज्य स्वामी जी के संपर्क में आए। उन्होंने 12वीं की साइंस की परीक्षा 93% से पास की थी। मुंबई की सोमैया कॉलेज में पढ़ने की उनकी बहुत इच्छा थी। लेकिन क्या पापा? लेकिन वहां एडमिशन फुल हो चुका था। वो मुंबई के प्रादेशिक संत पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी से मिले। वे मंदिर के प्रांगण में वॉक ले रहे थे। स्वामी जी ने कहा है, चिंता मत करना, एडमिशन मिल ही जाएगा, किंतु प्रयत्न करते रहना और भजन करते रहना। स्वामी जी का आशीर्वाद है, श्रद्धा रखना, आपड़ू हित ज थाशे। अब मेहुल भाई हर रोज कॉलेज में पूछताछ करने जाते और शाम को मंदिर में आकर धुन करते। यह उनका नित्य क्रम हो गया था। उनकी रोज रोज की पूछताछ से कॉलेज के स्टाफ वाले तंग आ चुके थे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक्सक्यूज मी। अरे तू परत आला, एडमिशन फुल हो गया है, फुल। तेरे को कितनी बार बोलने का, एक भी सीट खाली नहीं है। काई को रोज रोज दिमाग खराब करता है, कल से इधर दिखने का नहीं, समझा? नॉनसेंस। माइला कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मेहुल भाई बहुत निराश हुए, लेकिन मंदिर में धुन करते रहे। उसी दौरान स्वामी जी गोरेगांव राजावाड़ी पधारे थे। सरस सरस सरस, चिंता मत करना, तने एडमिशन मળી જ જવાનું છે। स्वामी जी का आशीर्वाद पाकर मेहुल भाई का विश्वास बढ़ गया। वो फिर से पूछताछ करने कॉलेज गए। अरे भाऊ, तू तो रोज ये तो था, तो शुक्रवार को क्यों नहीं आया? तेरा एडमिशन तो शुक्रवार को ही हो गया था। जा जा, फीस भर दे। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पेड़े घेऊन या।
अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से ही तो चमत्कार होते हैं। इसके बाद मेहुल भाई ने खूब लगन से पढ़ाई की। रेलवे हॉस्पिटल चेन्नई से एमडी करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली, लेकिन फिर से उनके रास्ते में रुकावट आ गई। कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव के थे। वो तो मेहुल भाई को एडमिशन देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन यहां भी स्वामी जी की कृपा से मेहुल भाई को एडमिशन मिल ही गया। पापा, डॉक्टर अंकल तो कितने अच्छे हैं, कितने स्वीट हैं और स्वामी जी को कितना मानते हैं, फिर भी बार बार उनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। भगवान स्वामी नारायण का वरदान याद है ना? यदि मेरे भक्त को एक बिच्छू के डसने का दर्द होने वाला हो, तो अनंत बिच्छुओं के डसने का दर्द मुझे हो, किंतु मेरे भक्त को ना हो। फिर भी भगवान कभी कभी जानबूझकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कठिनाइयों से लड़कर ही उनकी भक्त दशा और पात्रता विकसित होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती है। प्रिंसिपल की लगातार उपेक्षा और अपमान के बीच मेहुल भाई 3 साल तक पूरी लगन से पढ़ते रहे। फिर जब एग्जाम का समय आया, तब प्रिंसिपल ने कहा, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक सभी मेरे परिचित हैं। मैं देखता हूं तुम वाइवा इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हो। सर प्लीज मेरी बात। मुझे बहुत चिंता हो रही है स्वामी जी, ये लोग मुझे डेफिनेटली फेल कर देंगे। સાંભળો સાંભળો સાંભળો, ચિંતા ના કરીશ, તને એડમિશન મળી જ જવાનું છે। હા, તને બોલ્યા શ્રી હરિ ભજન યાદ છે? એમાં એક પદ છે, જીવ ઈશ્વર તણો રે, માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન, સૌને વશ કરું રે, સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન। આ પદ ગાયા રાખવાનું અને તમારા પ્રિન્સિપલને જઈને કહી દો કે અનંત બ્રહ્માંડમાં કેવળ એક ભગવાનનું જ થાયરું થાય છે અને એમની જ કૃપાથી તમને ને તમારા કોલેજને સન્માન અપાવીશ। जय स्वामीनारायण। जीव ईश्वर तणो रे, माया काळ पुरुष प्रधान, सहुने वश करूं रे, सहुनो प्रेरक हूँ भगवान। What are the positional changes in pain noted by the patients with pericarditis? Pain due to pericarditis is usually aggravated by throatic motion, cough or deep breathing. It is relieved by sitting up and leaning forward. बोल्या श्री हरि रे, सांभळो नर नारी हरिजन, मारे एक वार तारे, सहुने सांभळाव्यानु छे मन। Explain one abnormality of fatal heart condition. Pentalogy of central heart is one abnormality. Rib cage protects the heart from injuries, but here rib cage doesn't cover the heart. Heart has only skin covering. There are chances of injury anytime, and so risk of death anytime, even during delivery. But in occasional cases, people do survive. मारी मूर्ति रे, मारा लोक भोगने मुख, सर्वे दिव्य छे रे, त्या तो जोयानी छे जो। What are the cardiovascular disease risk factors? Cigarette smoking, high blood cholesterol, high blood pressure, diabetes, obesity, and lack of exercise. भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर इंटरव्यू ले रहे थे, जिनमें से 3 प्रिंसिपल से प्रभावित थे, किंतु मेहुल भाई तो महाराज और स्वामी जी से प्रभावित थे। उनकी परीक्षा 13 घंटों तक चली। सहजता और समझदारी से मेहुल भाई ने एक एक प्रश्न के उत्तर दिए। हमें तो कहा गया था कि तुम्हें नेगेटिव मार्क्स देना है, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर लगता है जल्दी ही तुम्हें अच्छी खबर मिलने वाली है। कीप इट अप।
अति तेजो मया रे रवि शशि कोटिक वारण जाय शीतल शांत छे रे तेजनी उपमा नव देवाय ते माहू रहू रे द्विभुज दीव सदा साकार दुर्लभ देवने रे मारो कोई न पामे पार। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। स्वामी जी, आपकी कृपा से मैं एमडी कार्डियोलॉजी में पूरे भारत में फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल के साथ पास हुआ हूँ। स्वयं देश के स्वास्थ्य मंत्री ने मेरा सम्मान किया है। सरस सरस सरस। હું ફ્રેશ થઈ ગયો હા બધો થાક ઉતરી ગયો। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है स्वामी जी। આપણે નિષ્ઠા પાકી કરવાની અને સંતો સાથે દોસ્તી મસ્ત 3 ગ્રંથમાં ડૂબી જવાનું અને સભા ભરતા રહેવાનું હા અને યુવા સેવામાં નિમિત્ત બનવું છે ને। जी स्वामी जी। મેની મેની થેન્ક્સ। આજે બાપા ખૂબ રાજી થશે। चलो चलो चलो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अगणित विश्वनी रे उत्पत्ति पालन प्रलय काय मारी मर्जी विना रे कोई दी तरणु नव तोड़ा। हमारी कॉलेज को इतना सम्मान दिलाने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। नहीं सर, आपके मार्गदर्शन और आपकी दी हुई शिक्षा के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम आज गोल्ड मेडल लेकर मेरे चरण छूने आए हो। भाई, तुम किस मिट्टी के बने हो? ऐसी विद्वत्ता, ऐसी विनम्रता और ऐसे संस्कार तुम्हें किसने सिखाए? ये सब मेरे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी की कृपा है। उनका स्पर्श कथीर को कंचन बना देता है। स्वामी जी ने मुझे सिखाया है कि विपरीत संजोगों में हमें प्रभु और गुरु का बल लेना चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे ये सफलता मिली है। मैं भी तुम्हारे गुरु जी के दर्शन करना चाहता हूँ और उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अवश्य सर। जीव ईश्वर तणो रे माया काल पुरुष प्रधान सहुने वश करूं रे सहुनो प्रेरक हूँ भगवान। अरे वाह, प्रिंसिपल तो एकदम बदल गए। मैं भी डॉक्टर अंकल की तरह गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। हर एग्जाम में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होऊंगा। शाबाश बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्वामी जी की तरह नित्य ठाकुर जी की पूजा करनी पड़ेगी, तभी ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे। ठाकुर जी की पूजा करने से गोल्ड मेडल मिल जाएगा? मात्र पूजा करने से गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। नित्य पूजा, सभा और प्रार्थना करने से भक्ति, श्रद्धा और आत्मबल प्रकट होता है, जिससे मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है और हम पूरी एकाग्रता से हमारे लक्ष्य की ओर फोकस कर सकते हैं। और हां, इसे केवल धातु की मूर्ति मत समझना। इस मूर्ति में स्वयं श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, सहजानंद स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी का वास होता है। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना। ठाकुर जी की भक्ति गुरु हरि स्वामी श्री के लिए अपने प्राणों से भी अधिक है। यदि ठाकुर जी साथ ना हो तो वे उनके विरह में अस्वस्थ हो जाते हैं। 1997 में स्वामी जी लंदन से लिस्बन यात्रा करने वाले थे। लंदन शहर से एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने की संभावना थी, इसलिए स्वामी जी के लिए एयरपोर्ट के पास ही आवास की व्यवस्था की गई थी। स्वामी जी के साथ जो कुछ संत थे, उनके आवास की व्यवस्था लंदन में एक हरि भगत के घर की गई थी। ठाकुर जी संतों के साथ ही थे, ताकि प्रातः उन्हें जगाकर अच्छी तरह से उनकी सेवा भक्ति की जा सके। स्वामी जी तो सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन
जी अभी गया? वो लोग रास्ते में ही हैं, बस आते ही होंगे। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद ठाकुर जी बस पहुंचने की तैयारी है स्वामी जी। Good morning passengers. This is the pre-boarding announcement for the flight AI642 to Lisbon. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes time. Thank you. ये तो हमारी फ्लाइट की अनाउंसमेंट है। मैं बाहर जाकर देख आता हूँ। This is the final boarding call for passengers on flight AI642 to Lisbon. Please proceed to gate 3 immediately. Have a safe journey. Thank you. अभी फोन आया था, संत और सेवक ट्रैफिक में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। स्वामी जी, वो लोग समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। कैंसिल कर दो, આપણે બીજી ફ્લાઇટમાં જતા રહીશું। ઠાકોરજી નથી આવ્યા ત્યાં સુધી આપણાથી ના જવાય। कृपाणु, दूसरी फ्लाइट हमें 3 बजे लिस्बन पहुंचाएगी। वहाँ एयरपोर्ट पर कई भक्त आपके दर्शन के लिए आए होंगे। वहाँ हम सबके थाल की व्यवस्था भी हो गई है। हमने पहुँचने में विलंब किया तो सभी बहुत निराश हो जाएंगे। स्वामी जी, सुदान भाई भी पोर्तुगल आना चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो वो ठाकुर जी को लेकर संतों के साथ दूसरी फ्लाइट से आ जाएंगे। बिना ठाकुर जी के जाने के लिए स्वामी जी राजी तो नहीं थे, लेकिन पोर्तुगल में कई भक्त उनका इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी के आने की खुशी में बड़ी उमंग से उन्होंने तैयारियां की थी। स्वामी जी उनको निराश कैसे कर सकते थे, और स्वामी जी ने सहमति दे दी। वचनामृत लाओ। जी स्वामी जी, बोलिए। स्वामी जी ने थाल ग्रहण किया? कुछ भी नहीं, बिना ठाकुर जी के पानी तक पीने से मना कर रहे हैं। मेरी उनसे बात करवाइए। स्वामी जी, स्वामी का लंदन से फोन है। जय स्वामी नारायण। प्रातःकाल हमने गर्म पानी से ठाकुर जी को स्नान करवाया है, हलवा पूरी का नाश्ता भी करवाया है। दोपहर के भोग के पश्चात ठाकुर जी को सुला दिया है। सुदान भाई ठाकुर जी को लेकर लिस्बन आने के लिए निकल चुके हैं। ठाकुर जी का पूरा ख्याल रखा गया है। हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपा करके आप अन्न जल ग्रहण कर लीजिए स्वामी जी। તમે ઠાકોરજીની ખૂબ સુંદર સેવા કરી, પણ તમને તો ખબર છે અમે ઠાકોરજીના દર્શન કર્યા વગર કશું જ લેતા નથી। આ તો અમારા ભક્તિની જ કચાશ હશે કે અમે ઠાકોરજીને સાથે ના લાવી શક્યા। स्वामी जी, आप तो भक्ति के स्वरूप हो। कमी तो हम में रह गई, इसलिए हम सब उपवास कर लेंगे। लेकिन दयालु, कृपा करके थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लीजिए। भले चलो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। परम भक्त सुरेंद्र भाई के घर जाकर स्वामी जी ने केवल संतों और भक्तों का मन रखने के लिए मुश्किल से 2-3 निवालों का सेवन किया और हाथ धो लिए। दोपहर 3 बजे के बाद सुदान भाई ठाकुर जी को लेकर लिस्बन पहुंच गए। मारी आंख मां द्रष्टा छे तू,
मुझने निरख तो तू, मारा दृश्य मां रहे तू ही तू, सर्वत्र दर्शन तारू प्रभु। बनो निर्विकल्प रहूं दासानुदास, बनो निर्विकल्प रहूं दासानुदास, हवे तुझ संकल्प तुझ आभार। निमित भूल को बनी तब चरण रम्या करूं विहर्या करूं समाया करूं। सरस 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 एक सहजानंद तू, सरस 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 एक सहजानंद तू। हे प्रभु तारे लईने हो, हे प्रभु तारे लईने हो, हे प्रभु तारे लईने हो, हे प्रभु तारे लईने हो। सरस 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 एक सहजानंद तू, सरस 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 एक सहजानंद तू। हे स्वामी, આપની ભક્તિ કરવામાં કચાશ રહી ગઈ છે. અબોધ અને અજ્ઞાની જાણીને અમને માફી આપજો. ફરીવાર આવી ભૂલ ના થાય એ માટે બુદ્ધિયોગ આપજો, જાગૃતતા આપજો. આપ તો અમારા પ્રાણ છો, આપને લઈને અમે છીએ, ક્યારે ભૂલીએ નહીં. हम सब पर अपनी कृपा करुणा वर्षावता रहो, वर्षावता रहो, एज प्रार्थना. स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण. आदर्श गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति और पराभक्ति उनका सहज जीवन है. गुरुवर्य योगी जी महाराज ने युवकों को अपना हृदय माना था और स्वामी जी ने युवकों को अपना सर्वस्व माना है. विश्व के कोने कोने में जाकर स्वामी जी युवकों से मिलते और अपने निस्वार्थ प्रेम से उनको भाव विभोर कर देते. लिस्बन में श्री सुरेंद्र भाई स्वामी जी के यजमान थे. अति साधन संपन्न और समृद्ध परिवार था उनका. लिस्बन में उनका आवास किसी महल से कम नहीं था. सुरेंद्र भाई, मारे युवक ने મળવા જવું છે. આ એનું એડ્રેસ છે. स्वामी जी इस जगह पर? हाँ जी स्वामी जी, ये एरिया यहाँ से काफी दूर है और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है. वहाँ काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स भी है. हम उस युवक को ही यहाँ बुला ले तो? ना ना, આપણે જ જશું. જરા સોચો,
जब हम उस युवक के घर जाएंगे तब उसे कितनी प्रसन्नता होगी અને બાપાની સેવાએ થઈ જશે। जी स्वामी जी, यदि आपकी इतनी इच्छा है तो हम अवश्य जाएंगे। उस इलाके में गलियां इतनी संकरी थी कि गाड़ी छोड़कर काफी दूर तक पैदल ही जाना पड़ा, किंतु स्वामी जी तो अपने निस्वार्थ प्रेम और वात्सल्य से उस युवक के हृदय में प्रभु भक्ति और स्वधर्म की ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए आतुर थे। स्वामी जी, કેમ છે દીકરા? महाराज की कृपा है स्वामी जी। उस युवक की स्थिति इतनी साधारण थी कि स्वामी जी को बिठाने के लिए उसके पास कोई ढंग का आसन भी नहीं था। स्वामी जी उसका संकोच समझ गए और निसंकोच जमीन पर ही बैठ गए। ना रेशम रुई के बिछौने में, ना महलों के आवास में स्वामी जी को सुख मिलता है हुल्कों के सहवास में। जब मैं मंदिर आपसे मिलने आया था तब आपने मुझे वचन दिया था स्वामी जी कि 8 साल के बाद आप मुझसे मिलने पोर्तुगल जरूर आओगे। आज आपने अपना वचन निभाया स्वामी जी। પિયુષ બેટા, હું કેવળ તારા માટે જ આવ્યો છું। संबंध अनुपम अर्पिया पे अंतर की सुखिया कर्या दुकाड़ना कोदरा गणी अमने हम भक्ति भाव स्वीकार्या आजे सगड़ू ऋण अदा करिए हो आजे सगड़ू ऋण अदा करिए समर्पित 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 थइए हरि चरण समर्पित थइए समर्पित 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 थइए हरि चरण समर्पित थइए आजीवन समर्पित हम अहम समर्पित मन बुद्धि समर्पित करिए आजीवन समर्पित हम अहम समर्पित मन बुद्धि समर्पित करिए समर्पित 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 थइए हरि चरण समर्पित थइए ऐसे आशीर्वाद, ऐसी गरज, ऐसी आतुरता कौन दिखा सकता है? इतना परिश्रम हमें आनंद में रखने के लिए कौन कर सकता है? ऐसी सेवा स्वामी श्री ने 87 साल 2 माह और 3 दिन तक हर सांस में की, निरंतर की। ऐसी गरज वो ही रख सकता है
जो सर्व समर्थ होने पर भी सर्व सेवक बनकर जीता है, तभी वो इतना झुककर हमें उठा सकता है, और वो हैं हमारे स्वामी जी। बन्या खूब कर जो बांधी प्रेम रज्जू, बन्या खूब कर जो बांधी प्रेम रज्जू, निभाववानो गजू मळे एवी आरज़ू, निभाववानो गजू मळे एवी आरज़ू। ગુરુહરિ સ્વામીજીએ પોતાના યોગમાં આવનાર દરેક ચૈતન્યને સર્વાંગી સુખી કરવા માટે અવિરત ગરજ રાખી છે। જેટલી ગરજ આપણને સુખી થવાની છે, એથી અનંત ગણી ગરજ ગુરુહરિએ આપણને સુખી કરવા માટે રાખી છે। ગરજ રાખીને તેઓ વ્યક્તિએ વ્યક્તિ સુધી સામેથી ગયા છે, ઘરો ઘર પહોંચ્યા છે। હું નાનીવેર ગામમાં રહું છું। આ ગામ એ મહાપ્રસાદીનું છે, કારણ આજથી 40 વર્ષ પહેલા ગુરુહરિ સ્વામીશ્રી 1982ના મે મહિનામાં સુરત પધાર્યા હતા। એ દરમિયાન સ્વામીજીની સભાનું આયોજન આ ગામમાં થયું હતું। સ્વામીજી રાત્રિના 9 વાગે સભામાં પધાર્યા હતા। 9 થી 12 સ્વામીજીએ સભામાં દર્શન અને પરાવાણીનો લાભ આપ્યો હતો। સભાની પૂર્ણાહુતિ બાદ સ્વામીજી બધાના ભક્તોને ચરણ સ્પર્શનો લાભ આપતા હતા। એ દરમિયાન ગામના એક રહેવાસીએ સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરી કે સ્વામીજી તમે મારા ઘરે પધારો। તો સ્વામીજીએ એમના ઘરે પધારવાનું નક્કી કર્યું અને સ્વામીજી એમના ઘરે પધાર્યા। સ્વામીજીને આવી રીતે કોઈ નવા વ્યક્તિના ઘરે પધારતા જોઈને એમના પડોશીએ એવું કીધું કે સ્વામીજી તમે મારા ઘરે નહીં પધારો? તો સ્વામીજી એમના ઘરે પધાર્યા। આ રીતે સ્વામીજીએ ગામના 52 ઘરોમાં પધરામણી કરી। સ્વામીજી જ્યારે દરેક ઘરોમાં જતા ત્યાં ઠાકોરજી પધરાવતા, ફૂલોનો છંટકાવ કરતા અને પ્રસાદી ધરાવતા। આ રીતે સ્વામીજીને પધરામણી પૂરી કરતા રાત્રિના 2:30 વાગી ગયા। સ્વામીજીનો જમવાનું થાળ બાકી હતો। સ્વામીજીએ જમવાની ના પાડી ને એવું કહ્યું કે આપણે ઉતારે જઈએ, પણ ભક્તોએ આગ્રહ રાખ્યો તો સ્વામીજીએ એમની ભક્તિ સ્વીકારી રાત્રે 2:30 વાગે જમવા બિરાજ્યા અને દિવ્ય સ્મૃતિ આપી। સ્વામીજીએ થાળ પતાવી લગભગ 3:30 વાગ્યાની આસપાસ સ્વામીજી એમના ઉતારે પધાર્યા। આ પ્રસંગ મારા પપ્પાએ મને શેર કરેલો, જે આજે હું તમને શેર કરું છું। આ તો સ્વામીજીના 87 વર્ષમાંના એક દિવસમાંના ભીડા અને ગરજનું દર્શન છે। આવું તો સ્વામીશ્રીએ આપને સુખી કરવા માટે જે પરે પરે ગરજ રાખી છે તે કલ્પનાતીત છે। આપણને રાજી રાખવા, આપણને આનંદમાં રાખવા માટે તેમને પડે પડ આપણી સંભાળ લીધી છે। આપણને ભગવાન અને સંતનો મહિમા સમજાવવા માટે એમને કિલોમીટર નથી જોયા, પરંતુ એક ધારી ગરજ રાખીને દેશ અને વિદેશમાં વિચરણ કરીને ભક્તોનું જતન કર્યું છે। રજ માટે ગરજ રાખી રહ્યા અમાપ, રજ માટે ગરજ રાખી રહ્યા અમાપ, બિંદુને સિંધુ કરવા શ્રમ કરો છો અથાગ,
बिंदु ने सिंधु करवा श्रम करो छो अथाग खुला राखी पाना रमत जीतो छो खुला राखी पाना रमत जीतो छो सर्वस्व सौनु लईने सर्वस्व सौने द्यो छो सर्वस्व सौनु लईने सर्वस्व सौने द्यो छो एवी गरज ने धीरजनी छे एक आरज़ू एवी गरज ने धीरजनी छे एक आरज़ू। ગુરુહરિ સ્વામીજીને આપણી સેવા કરવામાં ક્યારેય કંટાળો નથી આવ્યો. એમની એકની એક વાત સાંભળીને એ રીતે જીવન જીવવાની રુચિ આપણે રાખી કે ના રાખી એ તરફ એમને નથી જોયું, પરંતુ એકની એક વાત કરવા પાછળ એમને આપણા પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ છે અને આપણને સુખી કરવાની કેટલી ગરજ છે તેનું દર્શન થયા કરે છે. એક વર્ષ તો આપણે સિનેમા ન જોઈ, પેલું તો પરમેનન્ટ મૂકવાનું છે, પણ એક વર્ષ ટીવી પર જુઓ પ્રોગ્રામ, ઇવન ક્રિકેટ જુઓ, કોઈ ના નથી પાડતું, પણ ટીવી ઉપર કઈ સિનેમા ના જોવાય. હાડકાને ચામડાના એ ગંદા પુતળાને જોવા તરફ તમને કોઈ શરમ નથી આવતી? ટીવીમાં 3 જ ચીજ જોવાની: ક્રિકેટ, ગેમ્સ 1, ડિસ્કવરી ચેનલ્સ 2, સંતોનું ગોષ્ઠી 3, બાકી કાંઈ નહીં જોવાનું. ધ્યાન રાખજો. તમે બધા કોઈ મૂવી જોતા હોય બંધ કરી દેજો આજથી. ધાર્મિક પિક્ચર જોજો, રામાયણ જોજો, મહાભારત જોજો, શિવ પુરાણ જોજો, મોરારી બાપુની કેસેટ સવારના પરમાં એ સાંભળજો. મૂવી બંધ. આંખે કરીને યોગ્ય જોવાનું, કાને કરીને યોગ્ય સાંભળવાનું, જીભે કરીને યોગ્ય. કોઈ પિક્ચર જુઓ, ધાર્મિક જુઓ, કોઈ ના પાડતું નથી. સરદારનું જુઓ, કોઈ ના પાડતું નથી. કોઈ દેશનું, ભારત માતાનું આવે તો કોઈ ના પાડતું નથી. અયોગ્ય પિક્ચર નહીં જોવા. આંખ, કાન અને જીભને બગાડે એમાં પિક્ચર નહીં જોવા. આપણે આંખે કરીને પાસ નથી થવું. જોવું હોય તો કોઈ નેશનલ પિક્ચર જોઈ લઈએ, કોઈ ધાર્મિક પિક્ચર જોઈ લઈએ. રમલા પ્રેમીરા પિક્ચર જોવાનો આપણને અધિકાર નથી. ધ્યાન રાખજો. છેલ્લા 50 વર્ષોથી એવી અનેક આજ્ઞાઓ હજારો વખત ઘૂંટાવી છે. દાસના દાસ થઈને વળી જઈ રહેશે સત્સંગમાં. પિક્ચર જોવાનો આપણને અધિકાર નથી. દરરોજનું દેવું દરરોજ આપણે ચૂકવી દેવું છે. ભૂલતા નહીં. સમ સુરતમાં વિકતા વધશે, એમ તેમ હઠ, માન, ઈર્ષા જશે. ધ્યાન રાખજો. ગુરુહરિ સ્વામીજીએ સામેથી કરુણા કરી અને 2012થી એમની અંગત સેવામાં રહેવાની તક આપી. આ સેવા દરમિયાન એક દર્શન નિરંતર થયા કરતું હતું કે આપણને સૌને સુખી કરવા માટેની સ્વામીજીની ગરજ, આપણું આધ્યાત્મિક જતન થાય એ માટેની સ્વામીજીની ગરજના નિરંતર દર્શન થતા હતા. અમે સ્વામીજીની દેહની ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોઈએ અને બીજી બાજુ સ્વામીજી અમારા
આત્માનું જતન કરતા હોય. ઘણી બધી વખત સેવા દરમિયાન સ્વામીજીએ સામેથી બોલાવીને કે સેવા અટકાવીને સ્વામીજીએ કીધું છે કે તમે મારી સેવા નહીં કરશો તો ચાલશે, પણ 3 ગ્રંથમાં ડૂબી જજો. તમારી પાસે 3 ગ્રંથ ના હોય તો મારા પોર્ટફોલિયોમાં હોય છે એ લઈને બેસી જવાનું. એવો જ એક પ્રસંગ છે 2009ના અમૃત મહોત્સવ બાદ સ્વામીજીએ બાયપાસને ગ્રહણ કર્યું. બાયપાસ જેવા ક્રોનિક ઓપરેશન બાદ દેહની પરિસ્થિતિ કેવી હોય આપણને સૌને ખબર છે. તો ઓપરેશન પૂરું થયું અને એને બીજે જ દિવસે સ્વામીજીએ મને અને સર્વનિવાસ સ્વામીને બોલાવીને કહ્યું કે હમણાં તમારે કોઈ સેવા ના હોય તો પટેલ સાહેબ પાસે વચનામૃત સમજી લેજો. આપણે નવરા નથી રહેવું, આપણે આપણા જીવનનો સમય નથી બગાડવો. આમ અસંખ્ય વખત સ્વામીજીએ નિરપેક્ષ ભાવે સ્વામીજીએ આપણા સૌનું આત્માનું જતન ખૂબ ગરજ રાખીને કર્યું છે. संबंध सहज थाता मूर्तिમાં સૌ ખેંચાતા. संबंध सहज थाता मूर्तिમાં સૌ ખેંચાતા. ધાર્યું તમારું કરવા એના જેવા થાતા. ધાર્યું તમારું કરવા એના જેવા થાતા. તોય કહો ન ક્યારે તારાથી હું મોટો. તોય કહો ન ક્યારે તારાથી હું મોટો. મહિમા સમજતા થાય સાવ છોટો. મહિમા સમજતા થાય સાવ છોટો. એવી મકમતાની ઉદારતાની આરઝુ. એવી મકમતાની ઉદારતાની આરઝુ. આપણે આપણા સ્વભાવ અને પ્રકૃતિને આધીન નિરંતર વર્ત્યા જ હોઈશું, પણ તેમને કોઈ દિવસ આપણને તેનું જાણપણું નથી આપ્યું. આપણી અપેક્ષાની સામે તેમને ધીરજ રાખી અને આપણી ઉપેક્ષાની સામે તેમને ગરજ રાખી. કેનેડાના મોન્ટ્રિયલનો અર્લી 90sનો આ પ્રસંગ છે. સ્વામીશ્રી સભા બાદ પધરામણી જવા માટે કહેતા હતા. બધા ભક્તોએ કહ્યું કે સ્વામીજી બહુ મોડું થઈ ગયું છે અને આ વ્યક્તિ બી એટલી નેગેટિવ છે કે એને ત્યાં પધરામણી જવા જેવું નથી. સ્વામીજી કે ના આપણે જવું જ છે. અને પહોંચ્યા ત્યાં એમના ઘર આગળ એને ડોર ખોલ્યું અને એકદમ જોરમાં બૂમો પાડીને ભરડા પાડતા એમ કે આવો અંદર. એટલે અમે લોકો તો શોખ થઈ ગયા કે આ શું કરે છે સ્વાગત સ્વામીજીનું. સ્વામીજીની સ્થિરતા નહોતી ગઈ. અંદર જઈને બેઠા એટલે એ તો એકદમ જ એટલા જોરમાં ગુસ્સામાં બોલવા માંડ્યા કે તમે જુઠ્ઠા છો, તમારા વિશ્વાસ કોઈ દિવસ કોઈ ના કરે. એટલે સ્વામીજીએ તો શાંતિથી પૂછ્યું કે શું પ્રશ્ન છે? તો કે તમે મને કહેલું પણ મારા માટે તેલ નહોતું મોકલાવ્યું. એકચ્યુઅલી એમને પોલિયો હતો અને એને તેલ સ્વામીજીએ મોકલાવવાનું કહેલું અને એમને મોકલાયેલું બી ખરું પણ પહોંચ્યું નહોતું એમના સુધી. એટલે સ્વામીજીએ પછી હાથ જોડીને કહ્યું ભલે તો કે તમે ઠાકોરજીનું પૂજન કરી લો. તો કે તમે પહેલાં બહાર નીકળી જાઓ, મારે ઠાકોરજીના તમારા પૂજન બી નથી કરવું. એટલે પછી સ્વામીજી હાથ જોડી અને ઊભા થઈને નીકળી ગયા સહજતાથી, કોઈ જાતના ફેસ ઉપરના એક્સપ્રેશન નહીં, કોઈ બોલ્યા બી નહીં કાંઈ. અને પછી સ્વામીજી ગાડીમાં બેસ્યા. પ્રભુ સ્વામીએ પ્રાર્થના કરતાં વાત કરી કે
કે સ્વામીજી આપને ખબર હતી કે આ વ્યક્તિ આવી રીતના અપમાન કરવા જ બોલાવે છે, છતાં આપ કેમ પધાર્યા? ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે એક તો એમની ડોશીની અંતરની પ્રાર્થના હતી કે હું આવું તો આમનો હૈયાનો રોષ શાંત થઈ જાય. બીજું યોગીજી મહારાજની રીતનું આપણું આજે પૂજન થયું. અને ત્રીજું કે આ રોષ અને આ ઉકળાટ સાથે બિચારો ધામમાં જાત તો જન્મો જન્મ સુધી ફર્યા કરત. એ આજે એટલો મુક્ત થઈ ગયો અને એટલા માટે આપણે સામેથી જાણીને પણ એને માટે મળવા માટે આવ્યા. આ રીતે સ્વામીજીએ અનંતના હૈયાના તાપને ઠારવા માટે, જન્મોના જન્મો ઉડાડવા માટે ખૂબ સહન કર્યું, ખૂબ ગરજ રાખી. આવા ખાનદાન પ્રભુ ક્યાં મળે? આપણા હૈયાનો કચરો ઉલેચી અક્ષર બ્રહ્મ તરફની યાત્રા કરાવવા માટે તેમને કેટલી ગરજ રાખી. તેમને આપણને જેમ છે તેમ સ્વીકાર્યા છે, પણ ક્યારેય આપણા ગુનાઓ સામે નથી જોયું. बन्या खूब गरजू बांधी प्रेम रजू, बन्या खूब गरजू बांधी प्रेम रजू, निभाववानु गजू મળે એવી આરઝુ, નિભાવવાનું ગજુ મળે એવી આરઝુ. હે ગુરુ હરિ સ્વામીજી, જ્યારે અમે અમારા સ્વભાવ અને પ્રકૃતિને આધીન વર્તીએ ત્યારે આપની ગરજ પાછળ છુપાયેલી ખાનદાનીનો વિચાર કરી શકીએ એવો બુદ્ધિયોગ આપશો જી. आखिर ऐसा क्या आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में जो बच्चे हो या बूढ़े, अमीर हो या गरीब, सफल हो या लाचार, कैसे सबके पांव स्वामी श्री की ओर चल पड़ते, कैसे हर किसी का मस्तक उनके आगे झुक जाता. बहुत सुना है स्वामी जी के बारे में, ऐसे थे स्वामी जी, ऐसे थे स्वामी जी, पर और ज्यादा सुनने की चाहत है कि कैसे थे स्वामी जी. मैं बताता हूं कैसे थे गुरु हरि स्वामी जी. नहीं, मैं बताता हूं कैसे थे गुरु हरि स्वामी जी. मैं बताऊंगा. नहीं, मैं बताऊंगा. अरे अरे, स्वामी श्री के गुणों का तो अंबार है. यहां बैठा हर व्यक्ति भी अगर उनके गुण बताने लगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, पर उनके गुणों का व्याख्यान कभी खत्म नहीं होगा. बिल्कुल सही कहा आपने. मुझे क्षमा करें, आप शुरुआत करें. कोई गलती ना करके भी क्षमा मांगना, ये भी तो स्वामी जी का ही एक गुण था. आप ही शुरुआत करें. ऐसी विनम्रता और दूसरों को मौका देना, ये भी स्वामी जी का गुण था. एक समय था गुरु हरि स्वामी जी के सामने अपमान, तिरस्कार और विरोध अनगिनत थे, जबकि सहूलियत और सद्भाव के नाम पर शून्य. परंतु जिन्होंने शून्य में से विराट सर्जन किया, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी. आज किसी की छोटी से छोटी बुरी आदत छुड़ाना कितना मुश्किल हो गया है, परंतु प्रेम से हजारों युवाओं को बुरी आदतों के दलदल से बाहर निकाला, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी. आज का युवा धर्म और भक्ति से दूर भाग रहा है, पैसे कमाने और दिखावा करने को ही अपनी शक्ति मान रहा है. जिन्होंने हजारों युवाओं में भक्ति के भाव प्रकट किए, प्रभु स्मरण और प्रभु सेवा में अधिकांश समय बिताने वाले हजारों युवाओं का समूह खड़ा किया, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी. संपत्ति और स्वभाव के प्रभाव में आज हजारों परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं. जिन्होंने प्रेम और आध्यात्मिक सूझ देकर हजारों परिवारों को जोड़ा, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी. भोग और विलास में डूबे
हजारों युवाओं को संयम और सदाचार के मार्ग पर चलना सिखाया। ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी। आज निरर्थक और नेगेटिव बातें करना स्वभाव बन गया है। जिन्होंने हजारों युवाओं में पॉजिटिविटी का संचार किया, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी। आज चंचल मन को काबू में रखना मुश्किल हो गया है। जिन्होंने हजारों युवाओं के मन को न केवल शांत किया बल्कि उनमें आध्यात्मिकता का संचार किया, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी। आज स्वार्थ के कारण अपनेपन की भावना खत्म होती जा रही है। जिन्होंने ज्ञाति जाति के बंधन से परे ले जाकर हजारों परिवारों में आत्मीयता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जगाया, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी। हठ, मान और ईर्ष्या की होली में आज परिवार जल रहे हैं। जिन्होंने लाखों परिवारों में त्याग, सेवा, समर्पण और आत्मीयता जैसे सद्गुणों की दिवाली प्रकट की, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी। आज खुद की गलती होने पर भी दूसरों पर दोषारोपण करना, आक्षेप करना, खुद का बचाव करना कितना सहज हो गया है, जो हजारों युवाओं को उनकी गलती का एहसास करा के आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले गए, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी। काम, क्रोध, लोभ जैसे आंतरिक दोषों से पीड़ित हजारों युवाओं को दोष मुक्त करके निर्भय और निश्चिंत बनाया, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी। मानव निर्मित मंदिर में भगवान और गुरु की मूर्ति स्थापित करके प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति की मिसाल तो कायम की ही, लेकिन सदाचार और सद्गुणों को वहन करने वाले युवाओं के रूप में हजारों चैतन्य मंदिरों का निर्माण किया, ऐसे थे गुरु हरि स्वामी जी। एक पुरुष, एक व्यक्तित्व लाखों तक कैसे पहुंच सकता है? लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए कितना विचरण किया होगा, उनका परिवर्तन करने में कितना परिश्रम किया होगा। उस परिश्रम के पीछे निस्वार्थ प्रेम और निरपेक्ष भाव हो, तब ही परिवर्तन हो सकता है। ऐसे थे गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी। वे अद्वितीय गुरु भक्त थे, प्रेम के महासागर थे, आत्मीयता के उद्बोधक थे, सुहृद भाव के सम्राट थे, भक्तों के प्राण थे, मुमुक्षुओं के मोक्षदाता थे, लाखों युवाओं के मित्र थे, पिता थे, मां का स्वरूप थे, वर्तमान और आने वाली कई पीढ़ियों के वे मार्गदर्शक थे। ऐसे गुरु हरि, गुरु साक्षात परब्रह्म को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। आइए अब हम गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि के रूप में भक्ति अर्घ्य प्रार्थना पुष्प अर्पण करेंगे। भक्तगण अपने हाथों में पुष्प ले लेंगे। मंत्र गान के बाद ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण करेंगे। मंत्र पुष्पांजलिम् सेवन्तिका बकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै कुन्द प्रबाल तुलसी दलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर लोकनाथ। हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन्।
राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येशोको अभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति हरि ओं विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुत विश्वस्यात् संबाहुभ्यादमति संतत्रे भावाभूमि जनयन् देव एकः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्री अक्षर पुरुषोत्तमा श्री हरि प्रसाद स्वामी महाराजा भक्तमंडल सहिता इमां पुष्पांजलि समर्पयामि। मेरे प्यारे भक्तजन, मुझे अंतर्दृष्टि हो रही है। भूल हो गई मुझसे और मेरे दोनों साथियों से भी। आप में से भी किसी ने ना हमें रोका, ना किसी ने टोका, और हम बस कहते चले गए, हमारे स्वामी जी ऐसे थे, हमारे स्वामी जी ऐसे थे। क्या वो सिर्फ थे या वो सचमुच आज भी हैं यहां पर, आपके, हमारे, हम सबके बीच में, इस जगह पर, हमारे मन मंदिर में, हमारे मस्तिष्क पटल पर? वो हैं। गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनका शरीर तो मात्र हमसे संचार करने का एक माध्यम भर रहा, अन्यथा वो तो कब के हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारे जीवन शैली का एक अंश बन चुके हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण के वचन अनुसार वे प्रकट संत के रूप में सदैव अपने भक्तों के बीच रहते ही हैं। स्वामीनारायण परंपरा के ब्रह्म स्वरूप संत श्री जागा स्वामी जी ने एक बार अनादि मूल अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी से पूछा, स्वामी, मेरा जन्म श्रीजी महाराज के समय में नहीं हुआ, इसलिए मैं महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सका, उसका मुझे दुख रहता है। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, अगर आपका जन्म श्रीजी महाराज के समय में हुआ होता तो आप क्या करते? जागा स्वामी बोले, मैं श्रीजी महाराज का अखंड ध्यान करता। तब गुणातीतानंद स्वामी ने उत्तर दिया, महाराज प्रकट ही हैं, सिर्फ महाराज का आकार दिखता नहीं है, बाकी रोम रोम में महाराज ही है। ये है भगवान का प्रकट होने का संकेत, ये है प्रकट की परंपरा, ये है प्रकट की प्रतीति। निष्कुलानंद स्वामी जी ने भी कहा,
અનાથપણાનું મેણું ઉતર્યું સદા થયા સનાથ સદા થયા સનાથ કસર ન રહી કોઈ વાતની પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રસંગ પામ્યા પ્રભુ પ્રગટ પ્રસંગ ઢાળો અલૌકિક ઢળી ગયો મળ્યા હરિમુખો મુખ મળ્યા હરિમુખો મુખ હો ભાગ્ય જાગ્યા રે આજ જાણવા। गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी आज प्रकट है, संत में है, संत के रोम रोम में है, असंख्यों को प्रतीत हो रहा है, अनेक मुमुक्षुओं को दिव्य अनुभूति हो रही है। फूल मुरझाता है, मुरझाकर गिर जाता है, गिरकर जमीन में मिल जाता है, लेकिन सुगंध सुगंध तो हवा में घुल जाती है, घुलकर हमारी सांसों में मिल जाती है और मिलकर हमारी आत्मा में बस जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे ही थे नहीं, ऐसे हैं हमारे गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी। वो कभी हमारे लिए भूतकाल हो ही नहीं सकते। वो वर्तमान थे, वर्तमान हैं और वर्तमान ही रहेंगे। वे सर्वांग संपूर्णतः रोम रोम जिसमें बस रहे हैं, ऐसे संत हैं हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रबोध जीवन स्वामी जी। सैकड़ों मुमुक्षु भक्त लोग आज ये प्रतीत कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं कि गुरु हरि स्वामी जी हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, हमारे अंतर में है। मात्र देह धर्म की व्यक्ति हमारी स्थूल आंखें करती है, मगर हमारी आत्मा तो गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी की ही दिव्य अनुभूति कर रही है। तो आइए भक्तों की अनुभूति का आचमन हम भी करें। સૌ આત્મીય સમાધિ અંતરના જય સ્વામી મહારાજ। સ્વામીજી જે દિવસે અક્ષરલીન થયા પછી બીજે દિવસે સવારે એટલે કે 27 તારીખે સવારે નિત્યક્રમ મુજબ હું મારી પૂજા કરવા માટે મારી રૂમની અંદર બેઠો। પૂજા ગોઠવવાનું મેં ચાલુ કર્યું, પૂજા ગોઠવું, પણ પૂજાની અંદર મન ના લાગે। પૂજા ગોઠવતા ગોઠવતા સ્વામીજીની મૂર્તિ મારા હાથમાં રહી ગઈ અને એની સામે જોઈને ખૂબ રડાઈ ગયું। રડતા રડતા મારી આંખો બંધ થઈ ગઈ અને મારાથી એવું બોલાઈ ગયું, સ્વામીજી આપે મને અનાથ કરી દીધો। તો સ્વામીજી ઇન્સ્ટન્ટ દિવ્યોદય દર્શન આપ્યા અને સ્વામીજી મારી પૂજા જે ગોઠવેલી હતી એમાં એક સ્વામીજી આવીને બિરાજમાન થઈ ગયા અને બીજી સાઈડ પ્રબોધ સ્વામી આવીને બિરાજમાન થયા અને મારું રડવાનું ચાલુ જ હતું। તો સ્વામીજીએ મને આજ્ઞા કરી કે હવે આપણે રડવાનું નહીં। પછી મૂર્તિ મારા હાથમાં હતી એટલે ઇન્સ્ટન્ટ સ્વામીજીએ મારો હાથ એમના હાથમાં લઈ લીધો અને મારાથી સ્વામીજીને પૂછાઈ ગયું કે સ્વામીજી કેમ જતા રહ્યા, હવે અમારો કોણ? એટલે સ્વામીજીએ સીધો જવાબ આપ્યો કે મારું શરીર હવે સાથ આપે એમ ન હતું અને મારો હાથ સીધો સામે પ્રબોધ સ્વામીના હાથમાં આપી દીધો અને એમણે એવું કીધું કે હાથથી હવે તારે પ્રબોધની આજ્ઞામાં રહેવાનું।
એટલે મેં કીધું હા સ્વામી. પછી સ્વામીજીને મારે પ્રાર્થના થઈ ગઈ કે સ્વામીજી આપે તો કીધું હતું કે દાસના દાસ બનાવશો, તો સ્વામીજીએ ઇન્સ્ટન્ટ ફરી પ્રબોધ સ્વામી સામે આંગળી સીંધીને મને આશીર્વાદ આપી દીધા કે જો તું પ્રબોધ સ્વામીની આજ્ઞા પાડીશ તો દાસના દાસ થવા માટેનું આશીર્વાદ તને બક્ષિસમાં આપી દઈશ. હા સ્વામી. પછી સ્વામીજીએ મને કીધું કે આપણે રડવાનું નહીં, આપણે સિંહ થવાનું. મેં કીધું હા સ્વામી. પછી છેલ્લે સ્વામીએ એકદમ કાકલુથી ભર્યા અવાજે એવો મારી સામે જોઈને એવું કીધું આપણે યોગીજી મહારાજને રાજી કરવા છે. તો મેં કીધું હા સ્વામી. આ રીતે સ્વામીજીએ મને દિવ્ય દેહ દર્શન આપી મારા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન આપ્યું. અને સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રગટ ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. મારું નામ જશ સાયર છે. હું પ્રબોધમ યુવક મંડળ બોરીવલી ઘનશ્યામ પ્રદેશ મુંબઈમાં સભા ભરું છું. 2019 સપ્ટેમ્બરના મહિનામાં મને સ્વામીજીના ફર્સ્ટ ટાઈમ અનિર્દેશમાં દર્શન થયા હતા. ત્યારે બધા ભક્તો દર્શન માટે લાઇનમાં ઊભા હતા અને હું પણ લાઇનમાં ઊભો રહી ગયો. જેટલા જ હું સ્વામીજીના નજીક ગયો ત્યારે સ્વામીજીએ એમનો હાથ મારા હાથના ઉપર રાખ્યો અને જેટલા જ મેં સ્વામીજીના મુખારવિંદ તરફ જોયું ત્યારે મને આખું અનિર્દેશ દિવ્ય પ્રકાશિત થઈ ગયું હતું અને કેવળ સ્વામીજીનું જ મુખારવિંદ એમાં મને દેખાતું હતું. 6 ફેબ્રુઆરી 2020માં જ્યારે ગોરેગાંવ આત્મીયધામ મંદિરનું ખાતમુહૂર્ત થયું ત્યારે સ્વામીજી અને પ્રબોધ સ્વામી બે સભામાં આવ્યા હતા. એ ટાઈમ પર પ્રબોધ સ્વામીના મને ફર્સ્ટ ટાઈમ દર્શન થયા અને પ્રબોધ સ્વામી સામેથી વોકિંગ કરીને આવતા હતા ત્યારે હું પ્રબોધ સ્વામીના ચરણ સ્પર્શ કરવા ગયો. ત્યારે પ્રબોધ સ્વામીએ મને કીધું ઊભા 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 ઊભા. અને જેટલા જ મેં પ્રબોધ સ્વામીના ફેસ તરફ જોયું એ ટાઈમે આખું ગોરેગાંવ મંદિર દિવ્ય પ્રકાશિત થઈ ગયું અને કેવળ પ્રબોધ સ્વામીનું મુખારવિંદનું દર્શન થતું હતું. જેવી અનુભૂતિ મને સ્વામીજીના દર્શન વખતે થઈ હતી 2019 સપ્ટેમ્બરના મહિનામાં અનિર્દેશમાં, એવી ને એવી જ અનુભૂતિ જ્યારે 2020 ફેબ્રુઆરીના મહિનામાં ગોરેગાંવ આત્મીયધામ પર અમે ઊભા હતા અને પ્રબોધ સ્વામીના દર્શન થયા ત્યારે થઈ. ત્યારે એટલા કરીને મારો નિશ્ચય પાકો થયો કે જેવા સ્વામીજી મને મળ્યા છે એવા ને એવા જ પ્રબોધ સ્વામી આજે મને મળ્યા છે. उनकी साधुता, उनकी सहजता और आत्मा को छूने वाले दिव्य स्पंदन ही कहते हैं कि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज उनमें अखंड निवास कर रहे हैं. आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, स्मृति दिन के अवसर पर मैं गुरु हरि परम पूज्य प्रबोध स्वामी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आत्मीय समाज के सभी भक्तों के भाव स्वीकार कीजिए और स्टेज पर पधार कर हम सबको अनुग्रहित कीजिए. स्वामी हे हरि, हे स्वामी हे हरि. जीवन सहजता जो, जीवन सहजता जो. नाद जय जयकार ना. सहजानंद स्वामी महाराज की जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय. हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज की जय जय जय.
जयकारना तब भक्तो आज लई रया छे अंतरना वारणा तब भक्तो आज लई रया छे अंतरना वारणा हे भगवा धारी मूरत तारी श्री जी स्वयं पधारिया हे भगवा धारी मूरत तारी श्री जी स्वयं पधारिया प्रगट अक्षर पुरुषोत्तम जी मारे आंगण आविया